हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं गेटिंग ओवर इट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और गाइस ये वाली गेम बहुत ज्यादा स्ट्रगल होने वाला है क्योंकि भाई हमारे मतलब आपको मत सिखा। ये वाली गेम अब हमने शुरू कर दी है तो भैया हमें खत्म करनी है। हम करेंगे, आई कैन डू इट, और हम कर सकते हैं और हम करेंगे तो करना। एक ना एक दिन हम करेंगे। और भाई ज्यादा बकवास नहीं करना। ओके तो चलो भाई, गेम स्टार्ट हो चुकी है और ये मटके से कुछ निकल रहा है, दिख रहा है मुझे। ये निकला भाई, निकला। वीडियो में थोड़ी आवाज स्लो है तो मैनेज कर लेना। चलो मेरा भाई हमने ज्यादा बिल्कुल कुछ बोलना ही नहीं है इस गेम में। हमें सिर्फ करना है, हमें कुछ भी नहीं बोलना है इस गेम में। हमें कुछ बोलना नहीं है इस गेम में, बस मैं ये कर लूंगा। ये सिर्फ एक दो वीडियो का काम है, ये हो जाएगा। ये देखा, मैं प्रो हूँ इस गेम में, मैं पहले से बता रहा हूँ। मस्ती कर रहे हैं और दली दे पुत्रा तू बाद आ जा, तू बड़ी राम मौत मना। You deleted your homework the day before it was due. यहाँ रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ, मैं कर लूंगा ये गेम। Or if you let it fall रुको, in the थोड़ा इधर रुको। then you have to go back after spending an hour in ये the कर लूंगा, ये गेम कर लूंगा। If you won some money at the casino, you put all your winnings on red, but it came हाँ up कर black. लूंगा। If you got होने your वाला है, best बस shirt होने dry वाला है। cleaned before a wedding, and then immediately dropped your food on it. ये होने वाला If है। you won an argument with a friend, and then later discovered that they just returned to their original food. गुस्सा नहीं। Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go प्यार away. का करना होता है, ये हो जाएगा। I'll be ये here. होने वाला है, बस ये होने वाला है। ये हो गया। ये Alright, thanks for coming with me. On this trip. बस I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe हो place गया, to ये stop. गेम कंप्लीट हो गया। Don't worry, I'll save your progress always, देखा, even मुझे your पता नहीं mistakes. है। Oh my God! ओ नहीं। This game is a homage to a free game that came out in दरियाना 2000 मुझे पता है, titled मुझे Sexy पता है ये Hiking. दरियाना। The author of that game is Jazz, मुझे पता a है। mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. मैं And B games are rough assemblages of बस found यहाँ तक ना objects. करो था। Designers slap them together इसके very बाद ना quickly करो। and freely, and they're often too rough and unfriendly to ये gain मैं much बढ़ of a जाऊँ। following. They're built more for the joy of building them than its polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. That act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree. A lot of people never go past it. Prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, obstacle in Sexy Hiking is real. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazzuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past a new obstacle was my fault, as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real.
When you're building a video game Oh, world, oh, oh. you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. ये चढ़ गया. You mold your ये ideas चढ़- into a certain shape that can be played with. And in the ये चढ़ process गया of था. playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. But at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. यार ये क्यों नहीं हो गया तेरा? मैंने वो था इसमें मैं. अभी बस मैं अभी तुम लोगों को दिखाना नहीं चाह रहा. ये देखा. बस ये ट्रेलर दे रहा हूँ मैं. ये बस ये मैं कंप्लीट कर दूँगा. तुम लोगों को परेशान नहीं होना. ये देखो. ये यहाँ से ऐसे करके झटका देंगे इसको और ये नीचे गिर जाएगा. देखिए देख दीजिए चढ़ेगा ऊपर चढ़ेगा ये देगा अबे काली Oh, खोपड़ी. you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the Deep gut. frustration, yes bro. भैया फिर क्या है? चल मेरा पुत्र छुट्टी कर. मैंने कुत्ते गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही. वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और पहले ही बता रहा हूँ ये अभी सिर्फ ट्रेलर है. अभी इसकी वीडियोस आएंगी और ये कंप्लीट होगा गेम. जब तक के लिए सब्सक्राइब करो, फौरन से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसकी प्रैक्टिस मैं करूँगा और अगली वीडियो में